May I request to felicitate Sri Harivansh, Deputy Chairman, Rajya Sabha. May I request, thank you very much, sir. May I request Sri Sanjay Jaju, sir, to kindly deliver the welcome address on this occasion. Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan ji, Honorable Deputy Chairman of Rajya Sabha, Shri Harivansh ji, Honorable Minister for Information and Broadcasting, Railways, Electronics and IT, Shri Ashwini Vaishnav ji, distinguished guests, fellow officers and friends from the media. It's my privilege on behalf of the Ministry of Information and Broadcasting to extend a very warm welcome to all of you to this special ceremony for the release of 4 important books based on the speeches of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Your gracious presence this morning lends immense dignity and joy to the occasion. Today is also a very auspicious occasion, marking the first day of Navratri and also the implementation of GST reforms in our country. It's fitting that we are starting this day with the launch of books based on speeches of our Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, Publications Division is a premier media unit of this ministry. It has been meticulously curating and presenting various books in an attractive and reader-friendly format. Since its inception in 1941, this institution has published works of lasting value on themes of national importance, from our freedom struggle to culture, literature, cinema, and music, as well as science, technology, environment, and public health. Its legacy also includes publishing some of India's most respected journals, such as Yojana, Kurukshetra, Balabharati, and Ajkal, which have been in uninterrupted publication for more than 7 decades now. Another landmark contribution of the division has been Employment News. Now in its 50th year, it continues to serve as an essential guide for millions of job aspirants across the country. A core mandate of the division is to publish the collected speeches of our constitutional leaders, Honorable President, Honorable Vice President, and Prime Minister of India. This tradition, carried forward since the early years of independence, ensures that authentic reference material is available for researchers, policymakers, and citizens, capturing the issues and priorities that shape the journey of our nation. Today we are privileged that the Honorable Vice President, Shri C.P. Radhakrishnan ji, will be releasing 4 new volumes, 2 in Hindi, 2 in English. The first set covers the speeches of the Honorable Prime Minister delivered between June 2022 till May 2023, while the second set comprises a speech from June 2023 to May 2024. Alongside the print editions, the e-book versions are also being launched, making these volumes accessible to readers across the world with just a click. These books will be available through the Publication Division's website, its 10 regional sales centers, and also leading e-commerce platforms. To mark the occasion, a book exhibition has also been curated just outside the hall, showcasing all the previously published volumes of the Prime Minister's speeches, along with today's new releases. As I conclude, I once again thank all of you and extend my heartfelt welcome and gratitude to each one of you for joining us in this celebration of words, ideas, and vision. A vision that continues to inspire our nation and guide its progress. Jai Hind. Thank you, sir.
Honorable Union Minister for Information and Broadcasting, Railway, Electronics and IT, Shri Ashwini Vaishnav ji is a visionary leader, technocrat and administrator. He has spearheaded transformative initiatives that have modernized Indian railways, accelerated digital innovation and strengthened nation's technological framework. To mention some, the launch of Vande Bharat trains, high-speed rail expansion, and digital governance. Sir, we request you to address the esteemed gathering. Thank you for your very long introduction. Honorable Vice President Shri C.P. Radhakrishnan ji, sir, this is your first public function. We thank you for giving that honor to the Ministry of Information and Broadcasting. This is really a great honor for us. Honorable Deputy Chairman Shri Harivansh ji, you have always been blessing us. सभापति आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना प्रसारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय सांसदगण, सूचना प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू जी, माननीय उपराष्ट्रपति के सचिव श्री अमित खरे जी, अनेक वरिष्ठ और विशिष्ट लोगों को मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं वो, उन सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार। वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, आप सबको पुनः नवरात्र के इस पहले दिन बहुत नमस्कार। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, दोनों को बहुत धन्यवाद और आभार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों के 4 संकलन के लोकार्पण के लिए बमुश्किल 5 दिनों पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्मदिन पर देश, दुनिया व हम सब ने उनके दीर्घायु होने, श्रेष्ठ स्वास्थ्य, इसी तरह विजनरी दृष्टि से, उत्साह और ऊर्जा से, संकल्प से वह दिशा देते रहे, नेतृत्व करते रहे, यह हमने कामना की। हाल में मैंने देश की विशिष्ट पत्रिका का एक विशिष्ट अंक, स्पेशल इशू मूड ऑफ द नेशन पोल देखा, इंडिया टुडे का। 11 वर्ष से सत्ता में बतौर प्रधानमंत्री, इसके पहले लगभग 13 सालों तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री और अपने जीवन में टफेस्ट चैलेंज, टफेस्ट टाइम फेस करने वाले इंसान 52% लोकप्रियता के साथ आज भी देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि प्रधानमंत्री बनना एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है, और एवरेस्ट पर घर नहीं बनते। पर भारतीय राजनीति में पहली बार 52 के बाद आजादी की लौ थी, जो 57 का चुनाव हुआ, 57 के चुनाव के 5 वर्षों बाद जो लोग भी शिखर पर थे, एवरेस्ट पर थे, वो उनको पीपुल्स इंडोर्समेंट कमजोर होने लगा। शास्त्री जी का ब्रीफ पीरियड आया, वो एक अलग उनकी लौ थी, उनकी गरिमा थी। 72 में बड़ा बहुमत मिला। महज 2 वर्षों बाद गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, बिहार आंदोलन शुरू हो गए, और उसके पहले प्रोफेसर जयदेव सेठी ने किताब लिखी, इंडिया इन क्राइसिस। 84 में जो प्रचंड बहुमत मिला, महज 3-4 वर्षों में वो आपने देखा उसके प्रति कैसे एक जनता का आवाज, प्रति विरोधी आवाज खड़ा हुआ। दुनिया के लोकतांत्रिक व्यवस्था में शायद वो अध्ययन करना चाहिए, पर देश में यह पहली बार हुआ है कि किसी व्यक्ति को जनता ने कहा बार बार कि आप वहीं रहें, शिखर पर रहें, हमारा इंडोर्समेंट आपके साथ है। यह एक अद्भुत बात है। इतिहास गढ़ने वाले या दिशा देने वाले श्रेष्ठ नेतृत्व जो भी दुनिया में है, उनकी पहली शर्त है वो बेस्ट कम्युनिकेटर हों। अनेक पुस्तकें हैं दुनिया में जो विशिष्ट लेटर्स लिखे गए, जिन्होंने इतिहास बदल दिया, उनका तो उल्लेख होता है, पर आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी दुनिया के बेस्ट कम्युनिकेटर्स में से एक हैं, इसलिए उनके पुस्तक का लोकार्पण होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरी दृष्टि में। क्या कारण है, क्यों उनकी भाषण विशिष्ट हैं? उनकी बातों में आह्वान आप देखें, भाषणों में भाव देखें, मुहावरे जो सीधा संवाद करते हैं, वो सरल शब्द जो पहले दिल में उतरते हैं, बाद में मस्तिष्क में,
और धारणा यह है कि दिल, भावना और संवेदना ही इतिहास बदला करते हैं। सोचा समझा विचार अगर बदलता तो बहुत पहले सर्वोदय के दादा धर्माधिकारी ने कहा था कि जितने विशिष्ट फिलोसफर्स हुए वो दुनिया बदल दिए होते। आज तक दुनिया बदलते वो लोग हैं जो जनता के बीच से आते हैं, नया इतिहास लिखते हैं। मसलन 20 सितंबर को का उनका भाषण में पढ़ रहा था, एक लाइन में इतनी खूबसूरती से वो बात जो आपके दिल को असर करे कि आज की परिस्थिति में हमें क्या करना है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? दूसरे देशों पर निर्भरता। 100 दुखों की एक दवा, आत्मनिर्भर भारत। ये पीपल्स लैंग्वेज है सीधे, जो कन्वे करता है लोगों को। आप कभी सोचिए इस नारे पर, इसको क्वाइन करने के पीछे कितनी क्रिएटिविटी रही होगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ऐसा ही विकास भी, विरासत भी, अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए विकास। सीधा असर किन बातों का होता है? स्वच्छ भारत मिशन में एक तस्वीर दिखती है, झाड़ू हाथ में लिए हुए सफाई करते प्रधानमंत्री की, तब वो बात कहते हैं तो उसका असर। मैं ट्रेनों पर बहुत जीवन में यात्रा, ट्रेन में ही यात्रा करता रहा। आज मैं स्टेशनों पर घूमता हूं तो यकीन नहीं कर पाता कि मैं उसी देश में हूं जिस देश में 14 के पहले था ट्रेन यात्रा में। दिवाली सेना के बीच, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उनका संवाद कौशल अद्भुत है। भाषा पर जादुई गजब की पकड़ है। मसलन यदि वो जब कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासी अगर एक कदम उठाएंगे तो 125 करोड़ कदम उठेंगे, क्या उसका असर होता है? पर महज कहने से असर नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जी का असर क्यों पड़ता है? मैं आपको एक किताब का रेफरेंस देना चाहूंगा। इस किताब को देश के हर व्यक्ति को जरूर पढ़ा होगा, पढ़ना भी चाहिए। प्रोफेसर बलराम भार्गव जी ने लिखी, गोइंग वायरल। उस वक्त जब कोविड हुआ तो आईसीएमआर के हेड थे, जो टीका अनुसंधान हो रहा था। कैसे भारत ने कोरोना टीका बनाया और क्या चुनौतियां थी अंदर और बाहर से, उसकी भूमिका दलाई लामा ने लिखी है। गांधी जी कहा करते थे कि वर्ड्स और डिड्स में एकता हो तब आपकी बातों का असर होता है। लोहिया जी भी कहा करते थे कर्म और वाणी में एका। मोदी जी के वर्ड्स और डिड्स में एका है, इसलिए जादुई असर होता है। प्रोफेसर बलराम भार्गव लिखते हैं एक जगह कि लुकिंग बैक, मैं उनकी किताब से कोट करता हूं, द क्वेस्ट टू बिकमिंग ए वैक्सीन सुपर पावर वाज फ्यूल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स फेथ इन द कंट्रीज साइंटिफिक कम्युनिटी. He would repeatedly say that he would only and always go by scientific decisions, whether it is scaling up testing, rapid antigen test or restrictions. दूसरा कोट, जब टीका बन गया तो आपको याद होगा देश के बड़े विशिष्ट लोगों ने क्या उस पर टिप्पणी की। मैं इसको कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता आज के अवसर पर किस किस तरह की टिप्पणियां उन जिम्मेदार लोगों ने की जिनसे कम से कम देश ये अपेक्षा नहीं करता। उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। ये लिखते हैं हमारे प्रोफेसर भार्गव, जो वैज्ञानिक है शुद्ध रूप से, और उन्होंने कहीं बहुत जगहों पर प्रधानमंत्री जी का उल्लेख भी नहीं किया, जो जरूरत भी नहीं थी, मैं मानता हूं। पर एक वैज्ञानिक जब कहता है द डे द प्राइम मिनिस्टर टुक कोवैक्सीन वाज इंडीड ए हैप्पी डे फॉर मी व्हेन वैक्सीनेशन वाज ओपनड अप फॉर हिज एज ग्रुप आफ्टर द हेल्थ वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स ही टुक द वैक्सीन. At that time, we did not have the phase 3 results. His action addressed the skepticism of a lot of critics. आप समझ सकते हैं, मैं बिल्कुल गांव के इलाके में था जब वो वैक्सीन उन्होंने लिया। वो तस्वीर सिर्फ अपने आप में इतनी बोलती थी। वो डिट्स है, वो यकीन है, वो अपने फेथ को जीना है, जो गांधी कहते थे। और इसका जादुई असर हुआ देश में। वही वैज्ञानिक लिखते हैं कि अगर हमने टीका नहीं बनाया होता तो क्या होता। इफ यू हैड नॉट मैन्युफैक्चर्ड ए वैक्सीन, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, 1.4 बिलियन पीपल एंड नो वैक्सीन अवेलेबल, वी वुड हैव, मैं उनको कोट कर रहा हूं, वुड हैव बीन गोइंग अराउंड प्लीडिंग विद द यूएस, द यूके एंड द अदर्स टू गिव अस वैक्सीन. दे वुड हैव पुट देयर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट. Would China have given us vaccines? And even if they had given, it would be at a steep price. और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैं विस्तार में बताना नहीं चाहता किस तरह से उन लोगों ने सॉवरजिनिटी की शर्तें दुनिया के दूसरे देशों के सामने रखी, दुनिया के जो दवा मैन्युफैक्चरर्स से। ये कन्विक्शन है प्रधानमंत्री जी का, इसलिए उनकी बात सुनी जाती है। फिर वो आगे लिखते हैं, Those were emotional moments. The slogan used by top leadership at Indian Science Congress, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान,
ये वर्ड से लीव मैंने जीना होता है। हेल्थ द सोल्जर, हेल्थ द फार्मर, हेल्थ द साइंस, हेल्थ द रिसर्च, इंस्पायर्ड द होल विच सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, ये सपना मुझे आश्चर्य होता है कि 14 के बाद क्यों आया। हमारे बगल का मुल्क जो दुनिया में बड़ी ताकत बन गया, 77 तक हमसे पीछे था। 100 वर्षों का सपना जब 48 से 50 में उसकी व्यवस्था बदल रही थी, तब उन्होंने देखा और एक मुकम्मल दस्तावेज बनाया। हमारे देश में 14 तक मोदी जी का इंतजार करना पड़ा कि एक सपना देश देखे, और जब मोदी जी ने कहा तो आज सपना देश का सपना बन रहा है कि मैं 47 तक विकसित होना है। मैं गांव से आता हूं, जो मैं बार बार कहा, मैं उस गांव से आता हूं जो जयप्रकाश जी का गांव, 2 नदियों के बीच। जैसे गांधी जी ने कल्पना की देश के सबसे पिछड़े गांव, या देश मैंने कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो देश के सबसे जो कमजोर और सबसे जो अंतिम इंसान है उसके बारे में सोचे, तो देश में जो 10-20-50 हजार अंतिम गांव होंगे, उनमें 100 गांव पहले रहा था, अब बिल्कुल बदल चुका है। पर उस गांव में जाने पर अपर लोग भी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में? वो कहते हैं कि 24/7 जिस व्यक्ति ने देश को ही अपना जीवन लगा दिया, तो हम उसकी बात नहीं सुनेंगे तो आपकी बात सुनेंगे। वो अपर आदमी कहता है इस देश का यह, जैसे वो कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, तो अपने पॉपुलेशन प्रोफाइल के बारे में तो अद्भुत रूप से वो कन्वे करता है लोगों को। और नए विषयों को पकड़ना जो अनदेखा थे सार्वजनिक जीवन से, जिसे मैं कई बार उम्मीद करता हूं कि हम मीडिया के लोग, हम बौद्धिक लोग जो देश को की रहनुमाई करते हैं, वो जानेंगे। उनको पकड़ना और उसको मुख्य विषय बनाकर उनसे अपना तादात्म्य स्थापित करना, ये कला तो प्रधानमंत्री जी ने ही साबित की। परीक्षा पर चर्चा, या शहडोल के गांव में जहां कभी नशे का व्यापार चलता था, वहां के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ियों से बात हो, प्रधानमंत्री के मन की बात हो। ऑनरेबल पीएम के भाषण के केंद्र में जनता और श्रोता हैं, उनका हित है सीधे। विश्व कप फाइनल होने के बाद हताश भारतीय क्रिकेट टीम के पास जाकर हंसते हुए उनका हौसला बढ़ाना हो, या ओलंपिक में महिला हॉकी टीम के पराजय के बाद एक अभिभावक की तरह उनसे बात करनी हो, प्रधानमंत्री उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचे जिसकी उनको जरूरत थी। मनोबल बढ़ाना, भरोसा बढ़ाना उनका यूएसपी है। वे तत्काल लोगों से संवाद स्थापित करते हैं। चंद्रयान की पहली यात्रा मंजिल तक पहुंचकर मामूली चूक गई हो तो उदास वैज्ञानिकों के बीच खड़े बिना कहे उनके हाव भाव व्यक्ति देश की भाषा और भाव बोलते हैं। ये उनकी ताकत है। ऐसा वही नेता कर सकता है जिसने जनता के बीच रहकर जनसेवक के रूप में कठिन साधना और तप की हो, तो वो जनता को जनार्दन जो मानता हो। और इसका असर क्या होता है? इसी देश में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर गिव इट अप अभियान में अपनी गैस सब्सिडी छोड़ी। ऐसे ही करोड़ों लोग प्रधानमंत्री जी के कहने पर हाथ में झाड़ू उठाकर स्वच्छता अभियान में नहीं लग जाते। नेतृत्व तभी प्रेरक होता है जब वह प्रामाणिक हो, जिसकी कथनी और करनी में अंतर न हो। देश को अपने प्रधानमंत्री पर कितना भरोसा कि उन्होंने ताली बजाने या थाली बजाने का आह्वान किया तो लोगों ने उसको बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने संचार माध्यमों से जनता से सीधे संवाद किया, चाहे नोटबंदी का फैसला हो, कोविड के दौरान देश का हौसला बढ़ाना हो, हाल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की रक्षा नीति के बारे में और सफलता के बारे में बताना हो, प्रधानमंत्री ने सीधे जनता से संवाद किया। या फिर कल जीएसटी के लाभों पर सीधे लोक संवाद से देश को अवगत कराना। 2014 तक तो हम लोग ट्रांजिस्टर भूल चुके थे, टेलीविजन का युग था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात से रेडियो को किस तरह लाइव किया, उसका महत्व आज हम समझ सकते हैं। यदि कोई जमीन से जुड़ा राजनीतिक कार्यकर्ता ही सोच सकता था, ऐसा कोई जमीन से जुड़ा राजनीतिक कार्यकर्ता ही सोच सकता था कि कैसे देश के दूरस्थ समुदायों में समाज के प्रति किया जा रहा सकारात्मक प्रयासों से उनको अवगत कराया जाए, उनको देश की मुख्य धारा में लाया जाए। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ने देश के सुदूर स्थानों के गुमनाम परिवारों के गुमनाम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है। किन किन लोगों को पद्मा अवार्ड मिलने लगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। जो जंगलों में, जो देशों में जो बैठकर सचमुच काम कर रहे हैं, आज जो पद्मा अवार्ड पाते हैं, शहरों में बैठे लोग नहीं। विश्व मंचों पर उनकी चाल, भाव भंगिमा, स्वयं को कंडक्ट करने का तरीका एक सक्षम स्वाभिमानी देश के सर्वोच्च नेता को फबता है। याद करें 14 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, लुटियन मीडिया में किस तरह की चर्चाएं थी। राष्ट्रीय राजनीति का अनुभव नहीं है, विदेश नीति की कोई दृष्टि नहीं है। आज दुनिया के 26 बड़े देशों ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया। इनमें अमेरिका, रूस और परस्पर विरोधी राष्ट्र भी शामिल हैं। फ्रांस, ब्राजील, सऊदी अरब जैसे G20 देश भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री के भाषण कभी सरकारी भाषण नहीं लगते।
हमेशा ऐसा लगता है जैसे अपना अनुभव साझा कर रहे हों। लिखे हुए शब्दों वाक्यों की तरह भाषण का भी व्याकरण होता है। जब भाषण देते हैं तो श्रोताओं के साथ बराबर आई कांटेक्ट होना, हाथों का मूवमेंट, स्वर का उतार चढ़ाव, विषय पर पकड़ उनकी प्रामाणिकता बताते हैं। यह दक्षता जीवन के कठिन अनुभवों से आती है। लिखे भाषणों से वो प्रामाणिकता नहीं आ सकती। आर्थिक आंकड़ों या उपलब्धियों को बताने की सहज कला उनको विरासत में मिली है। यदि देश को विश्व अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर पहुंचने में 65 साल लगे और 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंचने में 11 वर्ष लगे, तो श्रोता को देश की प्रगति की दिशा और अर्थव्यवस्था की दशा तुरंत समझ में आती है। वह खुद इस आर्थिक प्रगति का हिस्सा महसूस करने लगता है। यदि बताया जाए कि देश का रक्षा निर्यात आज 23,000 करोड़ रुपए है, जो तुलना में 13-14 के सिर्फ 700 करोड़ था, 30 गुना अधिक तो जनता खुद को उससे जोड़ती है। देश में स्टार्टअप 2015 में 600 थे, आज बढ़कर 1.92 लाख हो गए हैं और कितने यूनिकॉर्न हो गए हैं, उससे जनता खुद को अपने को जोड़ती है। जनता को उसकी सामर्थ्य और क्षमताओं का भरोसा देना, यही लोकतांत्रिक नेतृत्व का फर्ज है और वो करते हैं। आज सभी योजनाओं के नाम के आगे सिर्फ प्रधानमंत्री लगता है। योजनाओं के नाम ऐसे कल्पनाशील कि उसे नागरिक तुरंत परिचित हो, अपने को जोड़ें। बैंक ऋण के लिए मुद्रा योजना, शिल्पकार बंधुओं के लिए विश्वकर्मा योजना, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत, ऐसे बहुत सारी चीजें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले ऐसी योजनाएं कुछ लोगों के नाम लगा करती थी और सरकार पिछड़े जिलों के लिए क्या स्थिति थी, मैं उस नक्सल इलाके में रहा हूं, देखा हूं। उन्हीं जिलों का आज आकांक्षी जिले कहना और वो जिले किस तरफ बढ़े हैं आगे, किसी को उस पर अध्ययन करना चाहिए। एक व्यक्ति, राजनेता बच्चों से, किशोरों से, युवाओं से, वृद्धों से, खिलाड़ियों से, इंजीनियरों से, श्रमिकों से, किसानों से, महिलाओं से समान रूप से तादाद में स्थापित करे, उनके बीच लोकप्रिय हो, यह अद्भुत है। मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी के रूप में हमारे लिए प्रधानमंत्री जी बेहतर श्रेष्ठ कम्युनिकेटर हैं। उन्हें पत्रकार के रूप में, सांसद के रूप में, सदन संचालन की भूमिका के रूप में भी देखा। हमेशा नए तथ्यों, शैली और अंदाज में प्रभावी बातों को कहना और हास्य और विनोद का भी अद्भुत उनमें पुट है। उनके भाषणों का संकलन आज के भारत के सरोकारों का प्रामाणिक दस्तावेज है। आधुनिक भारत पर शोधकर्ताओं के लिए सुगम और सुलभ हो, इस अपेक्षा के साथ मैं एक बार पुनः आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और राज्यसभा के सभापति माननीय केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री श्री वैष्णव जी, उनके सहयोगियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका आभार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, माननीय प्रधानमंत्री के भाषणों का संकलन। आइए इस लघु चित्र का अवलोकन करें। अब हम माननीय उपराष्ट्रपति जी से और मंच पर आसीन अन्य अतिथियों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि इन पुस्तकों का लोकार्पण करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका हिंदी और अंग्रेजी संस्करण 2022-23 और 2023-24 के समय काल के दौरान दिए गए भाषणों का संकलन। We are pleased to announce that all 4 books are now available in the e-book format for the convenience of the readers. The digital editions can be accessed and purchased via Amazon Kindle, Google Play Books, and the official website of the Publications Division.
May I now request the Honorable Vice President of India to release the e-books of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Sir. भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी का व्यक्तित्व पारदर्शी छवि, स्पष्ट विचार और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। अपने आदर्शों और नीतिगत दृढ़ता से वे लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के सशक्त संवाहक बने हैं। राष्ट्र हित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एक प्रेरणादायी नेतृत्व प्रदान करती है और नई पीढ़ी के लिए आदर्श मार्ग प्रशस्त करती है। Throughout his public life, our Honorable Vice President has held several highly distinguished positions, including Governor of Maharashtra. His remarkable contribution and approach have consistently reflected clarity, pragmatism, and an unwavering commitment to the nation's interest. विनम्र आग्रह माननीय उपराष्ट्रपति जी से अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। I touch and salute the holy feet of Bharat Mata, the most powerful and the most merciful. सबसे पहले मैं वात्सल्य और करुणा की भूमि भारत माता की कोटि कोटि वंदन करता हूँ। Today we are releasing the great speeches of our great Prime Minister Narendra Modi ji. The leader is one who inspires everyone. The great success of our Narendra Modi ji is that he inspires everyone. He inspires Ashwini ji, and Ashwini ji inspires all of us today, because 2 days back he has completed the biggest tunnel, the most critical path of the first bullet train in Mumbai. We all heard the inspiring speech from our Deputy Chairman of Rajya Sabha, Harivansh ji, and in his speech he has clearly expressed how he has been inspired by our Prime Minister Narendra Modi ji. My Secretary, Sriman Amit Khare ji, Secretary, Minister of Information and Broadcasting, Sriman Sanjay Sarju ji, and the distinguished guests who have gathered here, Sabiko Namaskar, and today is the first day of our great Navaratri festival. And my special greetings to all of you on this Navaratri. And this Navaratri is one, it inspires everyone. And we are all talking about equal rights for women. But there is no equal right. But it is more than equal for women in this country all the time. There is no single festival. There are so many festivals we celebrate every year, every month. But there is no single festival that has been continuously celebrated for 9 consecutive days that is only for goddess, not for God. That is way
that our society has been designed, and we got the great tradition of giving that first respect to the mothers. And after assuming the office of the Vice President of India, this is my very first public function, and that too on the Navaratri day, that too of releasing the great speeches of our great Prime Minister Narendra Modi ji. It's a matter of deep personal pride for me to release these volumes containing the speeches of our illustrious Prime Minister Sri Narendra Modi ji, speaking about a person who is living inspiration for millions across the country and abroad, who motivates people through his own contact to give their very best. We are always worried about how to give the best. I am always insisting, if we give our best, that is the greatest contribution that an individual can do it for the society. We should not worry about the best, but we should try to give our best. That all the best of ours will give the best of for the society. Our Prime Minister has grown from being a representative of the common man to the true people's leader, whose determination has shown us how the impossible can be made possible. Though 50% duty has been put on India by America, but Trump is always saying, Modi ji is my great friend. Even that situation he has not said, but he is always telling, I am for Modi. Modi ji is a great friend of Putin, he is a great friend of Trump. At the same time, Jinping also, in spite of the differences of international politics, is a good friend of Modi ji that we have seen today. And that's why he make all the impossible possible. When there is a will in your heart to serve the humanity without any expectation, then the way will come and the success will come. नामुमकिन को मुमकिन करना, असंभव को संभव करना. And who has been known to me personally for many decades. I am working with him for a long time. Now, more than 4 decades I am working with him. What is the difference between him and other leaders is that everybody is planning their good thoughts. The difference is he implements his good planning in the most perfect way. That's why the success is coming. Speaking about such a person is like taking a journey through countless memories. It becomes challenging to decide where to begin, and I find myself in that very situation today. These volumes containing the selected speeches from the 4th and 5th years of Prime Minister Modi ji's second term manifest his vision and approach to good governance in many ways. The books have been published under the titles Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Viswas, and Sabka Prayas. These speeches have been carefully selected and elegantly presented by the Publication Division of our Ministry of Information and Broadcasting, who deserves praise for their good efforts. And they all worked as a team that I appreciate their efforts. And on behalf of you, I am appreciating it, and I request you all to give a big hand for them. When one reads the speeches section by section, one begins to
clearly see the Prime Minister's vision, innovative approach to governance, clarity of thought on national and global issues, deep understanding of the people's sentiments. That is more important. People's sentiments cannot be ignored by a great leader. He always takes that into account, and that is his top priority. And his will to ensure that welfare schemes reach the very last person in the society. That is where the poverty can be eradicated. In short, these books are key to understanding the Prime Minister's contributions and dreams for the nation. They allow readers to connect with their Pradhan Sevak through his own words. In the past decade, we have been seen revival of our country's cultural identity. Our history's forgotten heroes have been brought back to the mainstream discourse by Ek Bharat, Shrestha Bharat. The Tamil Sangamam in Kashi and Gujarat, Janjatiya Gaurav Divas, renaming Rajpath as the Kartavya Path, a powerful message of prioritizing the public duty and public welfare in governance has been given. India's youth are the foundation of a developed nation in 2047. The government is constantly striving to unleash their creativity and expand the opportunities for their entrepreneurship. Be it Startup India, Fit India, and Kela India, these initiatives are not only creating opportunities for young people, but also empowering them through Skill India and massive Roser Melas. And when we are entering into a memorandum of understanding, the agreements with foreign countries, the skill development is getting the top priority. This mutual trust between the government and the nation's youth give us the strength to set and achieve big goals. The Mera Yuva Bharat, My Bharat initiative is based on this same faith and vision. In 2023, the world witnessed the historic G20 summit in New Delhi, where India's increasingly strong role on the global stage was clearly visible. India successfully championed the cause of developing countries, ensured that the African Union was admitted as a permanent member of the G20. An essential step towards giving all nations a rightful place in the world order. Nobody is inferior and nobody is superior. India has shown that our aspiration to become a global power is not driven by dominance, but by the idea of global welfare. Vasudhaiva Kudumbakam, the world is one family. Why we want to become powerful? Not to dictate terms to others, but take the humanity as a whole. At the same time, nobody can dictate terms to the poor nations. The government's focus is not just on the global, but equally on the local. The Vocal for Local campaign inspires our entrepreneurs to meet the challenges of creating products, make in India, made for the world. The vision of Atmanirbhar Bharat, the self-reliant India, even yesterday also he spoke about it, has already translated into tangible results. India's space missions, indigenous development of electronics and medical technologies are increasing self-reliance in defense production. The country has witnessed the success of Operation Sindoor, which highlighted the importance of indigenous defense equipment. On one hand, there are global initiatives such as the International Solar Alliance. On the other hand, schemes like PM Surya Gaur, Mufat Bijli Yojana has been launched to reduce the electricity burden on ordinary citizens.
the UN's Sustainable Development Goals find a direct reflection in the government's programs, whether it is quality education in the mother tongue, clean drinking water for every home, sanitation as a social habit, accessible health care, poverty eradication, clean energy, or climate action. Each of these schemes is being a powerful instrument of positive change in the lives of 1.4 billion Indians. In the past, India was facing severe poverty, as all we know when we are so young. People have to go in the queue to get their very essentials like rice, wheat, they have to be in the queue in the ration shop for a long time. And it is not freely available in the open market. In the last 11 years, through the use of technology and various government initiatives such as Jan Dhan Yojana, Aadhaar mobile linkage, direct benefit transfer, PM Garib Kalyan Anna Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana, Lakbadi Didi, and many others like PM Kisan for farmers, Mudra Yojana, PM Sivanidhi, and PM Vishwakarma, more than 25 crore people have been able to come out of extreme poverty and live a life with dignity. When a toilet is built in a house, it is not only promotes the cleanliness, but also gives dignity to the woman of the household. How they go in the late night or in the early morning, that has been solved out. Thus, this collection of speeches has been aptly titled, there cannot be better title than this, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Viswas, or Sabka Prayas. Prime Minister Modi draws upon Bharat's civilizational ethos rooted in Dharma, Kartavyabodh, and Seva Bhav. He reminds us that a strong nation is not built on power alone, but on character and unity. We want to develop, but at the same time we want to preserve our great tradition. For the Prime Minister, no goal is ever too far or too difficult, for he constantly draws strength from the power of 1.4 billion Indians. His unshakable faith in our collective potential turned the Swachh Bharat Abhiyan into a mass movement of Jan Bhagirathi, and instilled in the spirit of cleanliness is service. The same faith gave him the courage to lead India firmly on the path of self-reliance during the COVID crisis. A decade ago, India was considered as a fragile five economies. Today, India has proudly grown as the fourth largest economy in the world. From nowhere, we come to fifth. From fifth, we have reached fourth, and we are moving towards third. And I am sure by 2047, India will be the number one economy of the world. This is not merely an economic achievement, it is the fruit of national discipline, self-reliance, and the spirit of Rashtra Pratham. India first, motherland first, that guides our development journey. It is heartening to see the dream of Viksit Bharat shining in the eyes of the principle of Rashtra Pratham, that is nation first, echoing in the heart of every citizen. This renewed love for our heritage, history, language, and culture is sign of the country's Amrit Kal. As you read these volumes, many such thoughts will arise in your mind too. These books will help us to understand the strength and aspirations of New India and inspire all of us to remain committed to our duties.
during the Amrit Kaal leading to Viksit Bharat by 2047. Yes, we have to read about our rights, but our rights will get protected when we complete our duties in the most rightful way. My heartiest congratulations to the Ministry of Information and Broadcasting and the entire Publications Division team once again for their great effort in bringing these most wanted volumes of speech of our great Prime Minister Narendra Modi ji. As the great Saint Thirular has said, Kodayali Sengol, Kudiyombal, Nangum, Udayanam, Vendarkoli. That means he is the right of rulers who has four qualities: beneficence, benevolence, rectitude, and care for his own people. May our country continue to benefit from the lights and thoughts of our great leadership of our Honorable Prime Minister. And I am sure with all these great inspiration what the youngsters are getting from our great Prime Minister, that will induce them to work more, that will induce them to achieve more, that will induce them more disciplined, and that will induce them to conquer the world, not to dictate terms to others. But nobody can dictate terms to any poor nation. With these words, I am really happy, and I thank our Ashwini ji and the IB Ministry for giving me this opportunity as my first public function after I am assuming the office of Vice President of India. Thank you. Long live Bharat. Thank you.